Hello guys. Yeah, so we are live with another episode after a really long time, and this time we are doing it on YouTube. And I think people from Twitter and other platforms can also join in. So today the main topic of discussion is a little bit of urgency and also of concern, because today morning everybody got a news that almost all the Indian markets are panicked about. So one of the largest exchanges in India has been hacked with a large sum of money, and we are gonna talk more about what happened, how it happened, and if people have their funds over there, what they should do, and all the other questions that you may have. So we have Krish and Shobit with us. So we'll be starting off with what happened exactly, and then moving on to the other parts. So Krish, if you want to take it ahead about the exchange. थैंक यू सैम। आज मैं हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि लाइक मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड हिंदी, तो हिंदी में ही बात करना सही रहेगा। ये जो हुआ है, सो दिस वाज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। ये मतलब बहुत दिन से प्रेडिक्टेड था कि इंडियन एक्सचेंजेस आर वल्नरेबल, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस अपने वॉलेट यूज नहीं करते हैं, कस्टडी वॉलेट यूज करते हैं, या फिर प्रॉपर एक्सचेंज सेटअप नहीं है, दे डोंट हैव देयर ओन ऑर्डर बुक, वो बाहर से एपीआई यूज करके अपने ऑर्डर बुक लाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑलवेज एट अ प्रॉब्लम। और इंडिया में क्योंकि कस्टडियन एक्सचेंजेस, वॉलेट्स, ऑन ऑफ रैम्प, सब कोई एक्सचेंज ही मेंटेन करता है। सो इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे बहुत सारा पैसा एक जगह में जमा रहता है। सो WazirX got hacked. Before we go into all the details, तो जो हैक अमाउंट जो कि $235 million के आसपास है, रफली 2000 करोड़ INR के, मतलब INR टर्म्स में। एंड WazirX had I think $450 million before this hack. So now 500. They have like half of that asset under custody. So before going more deeper into the hack, a general question, a general thing to all the users, now that WazirX has stopped withdrawing INR, withdrawals of INR or crypto, जब भी आपको withdrawals allow करे, better withdraw all your money out, because you don't know how big is the hole. जो amount यहाँ पे declare किया गया है, it's around 235 million, which is half of their asset, but it can grow even further, right? So if you have assets on WazirX, the first thing you should do is take it out. So hopefully Sam and Shovik, I don't think you have any assets on WazirX, but unfortunately a lot of our users और अभी तो वो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि एसेट विड्रॉल जो है वो ब्लॉक हो गया, फ्रीज हो गया अभी के लिए। इनफैक्ट आईएनआर विड्रॉल जो है ना वो भी बंद कर दिए। ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। मतलब इसीलिए हम लोग पहले भी कहे हैं कि लाइक यू शुड यूज एन एक्सचेंज जस्ट फॉर ट्रेडिंग। एक्सचेंज को अपने वॉलेट के हिसाब से ट्रीट मत करो, इट्स नेवर राइट। दैट इज द मेन थिंग वी वांट टू डिस्कस हियर। अब कैसे हैक हुआ, क्यों हैक हुआ, विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, आई वुड लाइक टू से कि ये जो हैक हुआ, दिस वाज detected like I think today early in the day, and we tried to contact WazirX also from our side to say that if there's a hack, let us know. We can probably help in some ways in trying to connect you with international white hat hackers so that these hackers can be stopped in depositing or converting their crypto, or their wallets can be put on blacklist. But abhi tak to koi response nahi aaya hai. Hopefully WazirX team is on it and they will be going to the right channels, and maybe they will get some of the money back as well. So बात यही है कि this will have multiple ripple effect, क्योंकि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो there is always consequences. So I think the biggest consequence right now जो हुआ इसके बाद यही होगा कि इंडियन FIU और गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा
और जो हम लोग सोच रहे थे कि 2027 2028 में लाइसेंसिंग रेजिम आएगा या फिर रेगुलेशंस से सेल्फ रेगुलेशन जाएगा, ये इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है दिस विल बी प्रीपोन्ड बाय एटलीस्ट वन मोर ईयर. तो आई गेस 2026 में वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ बेसिक रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स. तो ये तो एक हुआ. दूसरा चीज जो होगा वो होगा कि इंडियन क्रिप्टो इज ऑलरेडी लाइक द रिटेल स्पेस वाज डाइंग. तो बहुत सारे लोग जो रिटेल स्पेस में पहले ट्रेड करते थे, दे जस्ट बिकम होल्डर्स. And majority of them, I think WazirX had like 20 million users, $500 million worth of, roughly $450 million worth of asset. So all these users will have a negative impact. So अगर किसी का loss हुआ है, they are not going to promote crypto, right? They are going to say crypto is a scam. तो इंडियन स्पेस में एफटीएक्स के स्कैम या एफटीएक्स के हैक के बाद, एफटीएक्स के डिबैकल के बाद ये दूसरा इंसिडेंट है. So Vault was first one and then WazirX the second one. So I think this will probably be a very bad death knell for the trading community in India. But जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So I think this was due, and then something like this is enough for making the regulator sit up and take notice कि ये भी हो सकता है. Yeah, so I think that's basically the first layer, first झटका जो सबको लगा होगा कि money stuck, bad PRs everywhere, crypto is a scam, and people are doing this. That's the first thing that is going to happen immediately. Anything else you can think of, Sam or Shobit? So I think there are some things जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत लोग ऑलरेडी मूव आउट कर चुके हैं क्रिप्टो और स्टोरिंग देयर एसेट्स इन इंडियन एक्सचेंज आफ्टर द टैक्स लॉज. एंड जो भी ट्रेड कर रहे थे एक्टिवली, दे हैव आइदर पुट सम ऑफ देयर एसेट और फुल ऑफ देयर एसेट्स इनटू प्राइवेट वॉलेट्स एंड यूजिंग डेक्सेस, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और यूजिंग सम ऑफ द इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड जस्ट यूजिंग इंडियन एक्सचेंज एज their way to on and off ramp basically to USDT and INR. So other than that, जितने भी assets थे वो maximum holders होंगे जो कि पिछले bear run में पैसे invest किए थे, and then the market fell down and they are like okay, निकालने से भी they have to book losses, and they are like okay, let's keep it and wait for the next bull run to come in, then maybe they would cash out or take it out further. But after this, I think they are also on the live session as well. I have been seeing some tweets that some of the users are begging the hackers that hey, please return our funds and all in Twitter. So yeah, so people are also trying to get involved and get their money back so that they can take it out and be safe on the safer note. But yeah, I think from the morning today only in different groups into CoinDCX and other exchanges group, there were some people who started discussing something like that, because I think most of the जो agencies है जैसे chain analysis है जो ऐसे सॉफ्टवेयर उनसे कहीं ना कहीं खबर आ चुका था बहुत पहले कि ऐसा कुछ लूट या हैक हुआ है. I just saw a tweet from Quill Audits as well. शौविक, आपको क्या कहना है? एक्चुअली इसमें सिक्योरिटी ब्रीच जिस लेवल पे हुआ है ना, तो वहाँ पे जाकर थोड़ा सा तो दिक्कत वाली चीज़ है. जैसे कि नॉर्मल वॉलेट या फिर हॉट वॉलेट से तो हुआ है, लेकिन वो मल्टीसिग वॉलेट था. तो फिर मल्टी सिग्नेचर जो है जिसके थ्रू लॉगिन होता है, तो सिंगल लॉगिन वाला वॉलेट नहीं था. तो उसमें जाके वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है. नंबर 1 पॉइंट है. और दूसरा, जैसे कि आप बोल रहे थे कि इसका तात्पर्य क्या है? इससे आप क्या बोल सकते हो कि लाइक अगर सिंगल वॉलेट देखो, नहीं था, इसका तात्पर्य ये है कि डिफरेंट लेवल का जो हॉट वॉलेट होता है उसमें आप देखिए कि मल्टी सिग्नेचर मतलब क्या हो गया, मल्टी साइन इन का ऑथेंटिकेशन देने के बाद उस वॉलेट को एक्सेस किया जा सकता है या फिर उससे विड्रॉल हो सकता है. अभी एक साइन इन ऑथेंटिकेशन वो तो चलो माना जा सकता है, लेकिन मल्टी साइन इन ऑथेंटिकेशन उसको भी जब ब्रेक कर रहा है तो मतलब कुछ बड़ा कांड करने वाला ही इसके पीछे होगा, या फिर उसको बहुत सारी चीज पता होगा. और दूसरा चीज ये है कि इंटरनल ब्रीच, इंटरनल इन्वॉल्वमेंट. हाँ मतलब अगर एक्सटर्नल ब्रीच
मतलब बेसिकली इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि आपके पास एक ताले का 3 चाबी है और तीनों चाबी आप यूज करते हो या 2 चाबी आप यूज करते हो, तब उस ताले को आप खोल सकते हो, राइट? तो अगर दोनों चाबी आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब both these person have either colluded or both these person were hacked. तो जब तक ये क्लियरिफाई नहीं होता है या ये कंफर्म नहीं होता है कि ये हैक किस लिए हुआ है, multisig private key was exposed or breached or you know went to the hackers, that's why this money moved, understood, but how did this happen? Did it happen कि लाइक आपके पास एक ईमेल आया, आपने उस ईमेल को क्लिक किया, या आपको कोई नाइजीरियन प्रिंस ने $100 मिलियन भेजा है, आप वो $100 मिलियन के लिए क्लिक कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई द वायरस इज कमिंग, या फिर जो कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स यूज करते हैं, लाजुरस ग्रुप, they send you some GitHub documents and tell you to do some development code and you will be given a job. तो इस तरीके से जॉब का लालच देके भी मतलब हैक होता है। मतलब व्हाई डिड दिस हैक हैपन? हैक हुआ है फाइन, बट व्हाई डिड दिस हैक हैपन, दैट हैज टू बी क्वेश्चन। और यहीं पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बीइंग सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू नो 50% ऑफ योर फंड्स बी इन वन वॉलेट टू बी हैक? मतलब रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो, जनरली कोई भी एक्सचेंज, कोई भी मतलब रेप्यूटेड एक्सचेंज, अगर उनके पास $450 मिलियन होते हैं, तो दे विल डिवाइड इनटू बैचेस ऑफ 50 मिलियन और 100 मिलियन। वो 50-50 नहीं रखते कहीं पे भी। इवन इफ यू गो टू द वॉलेट सिस्टम लाइक कॉइनबेस या फिर सॉरी फायरब्लॉक्स या फिर बिटगो, दे आल्सो डिवाइड, लाइक 100 मिलियन हो गया, दे ब्रेक इट एंड दे क्रिएट अ न्यू वॉलेट। तो एक वॉलेट में इतना पैसा नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंसर्न कि क्यों इतना अमाउंट जो 50% ऑफ देयर एसेट है एक वॉलेट में था, या एक सेट ऑफ कीज से एक्सेस कर पाए। तो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लुक इनटू इट कि उनका रिस्क कंट्रोल, उनका रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से था, ताकि दिस काइंड ऑफ इसका थिंग्स कैन बी अवॉइडेड बेसिकली। इसका क्रिस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस तो काफी सारा है। जैसे शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस में ये तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट डेफिनेटली करेगा, क्योंकि बहुत सारा इंडियन रिटेल यूजर्स जो है वो उनका वॉलेट वॉलेट में होगा, वो लोग अभी तो विड्रॉल ये नहीं कर पाएंगे, तो वो काफी इंडियन सारा स्पेसिफिक नेगेटिव है। करेक्ट। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है। और इसकी वजह से हो सकता है और दो एक तो इवेंट या फिर फेनोमेना आप बोल सकते हैं, जैसे कि एम्प्टी कॉक्स का रीपेमेंट जो है वो आने वाला है, तो उसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए। तो ये सब दो सेंटीमेंट को अगर हम लोग कंबाइंड देखें तो हो सकता है कि अभी जिस लेवल पे बीटीसी है उससे थोड़ा सा बेटर प्राइस अभी हम लोग को और मिल जाए। और एक फ्यूचर का एक डेटा भी है जहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, अगर आप टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा जाए तो हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो फिर थोड़ा सा हम लोग को इससे बेटर प्राइस मिलने का एक चांस है। ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो धीरे धीरे ये सब सेंटिमेंट फिजल आउट होते हुए देखा जा सकता है, और आने वाले दिनों में सेंटिमेंट फिर से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा। तो यही है फिलहाल तो सिनेरियो काफी मार्केट तो और एकदम एक इसको तो अच्छे एक से तो नहीं, सेंटिमेंट तो बहुत दूसरा खराब हो, स्पेशली सामने बजट आने वाला है, तो फिर ये तो मुद्दा तो उठेगा, ये मुद्दा तो मुझे जहाँ तक इम्पोर्टेंट मुद्दा लगता है। हो जाएगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो को लेके बहुत बार बहुत लोगों ने बोला है कि प्लीज क्लैरिफाई कि किस तरीके से क्रिप्टो को आप रेगुलेट करने वाले हो, विल इट बी तो सीरीज ऑफ सिक्योरिटी? सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल बजट से पहले हुआ है ये चीज, वो इंडियन एक्सचेंज, वो भी 50%। मतलब कुछ कुछ फैक्टर ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब एक के बाद एक जैसे पैटर्न जैसे फॉलो कर डोनाल्ड ट्रम्प को जैसे डोनाल्ड ट्रम्प शूट हो गए, राइट, यूएस में, इट्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी। ट्रू। तो एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। अभी इसके बाद जो सेकंड इम्प्लीकेशन है, क्योंकि बहुतों को पता है कि वजीरेक्स इज वन ऑफ द थ्री बिग एक्सचेंजेस and all the exchanges have exposure with each other most of the time. तो यहाँ पे I cannot say that which exchanges might be in trouble, yeah, which exchanges might have lost something, but इतना तो sure है कि because of this hack, not just retailers, but other crypto exchanges in the market will also suffer. चाहे वो बोले या चाहे वो नहीं बोले, whatever is the case, but if they have exposure with WazirX, their money is also stuck, their money is also gone. So whichever exchanges was using WazirX APIs or whichever exchanges was using WazirX Desk,
to trade, they will lose some money for sure. Now, of course, they have enough money from investors, they will fill it up, but they will lose some money. तो इसीलिए जो हम लोग पहले से बोलते हैं, use an exchange for trading, but then withdraw your crypto out. Keep it on your cold wallet or keep it on your hot wallet, whatever it is. That way, you will not have suffered this consequence. शॉर्ट टर्म में आई थिंक ट्रेडिंग वाइज जो भी वजीरिक्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, दे आर ट्रेडिंग एवरीथिंग एट डिस्काउंट बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू आईएनआर, ताकि जब गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट बोले हे यू हैव दिस मच आईएनआर, पहले आईएनआर आप सबको दे दो. सो दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव नोटिस्ड एज वेल कि crypto is being sold at WazirX at like 15% discount. So if you want to buy BTC in WazirX and if you have INR, anyways you cannot withdraw, right? So better have BTC than INR. But it's a sad situation, like you cannot withdraw it out. तो ये हो गया दूसरा चीज. तीसरा चीज मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा कि जैसे बहुतों को पता भी है और जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि WazirX और बाइनेंस के बीच में एक इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप था, अभी भी है. Nobody knows exactly how much % of Binance owns WazirX and what is the status of the deal. So at one point of time, people were saying it's majorly owned by Binance. Only the Indian business is owned by WazirX, which is some lab. And इस incident के बाद, what I think is going to happen is that people who are running WazirX, they are going to take a hands-off approach and they will say कि you know ये जो hack हुआ है, whatever has happened is because of Binance. क्योंकि wallet hack हुआ है, बैंक से तो कोई issues नहीं हुआ है. And everybody knows that WazirX was using Binance custody or Binance wallet. So was it a negligence from Binance wallet's part or was it a negligence from authorizer's part कि जो authorization कर रहे हैं ये wallet को hot wallet से cold wallet में, multi-sig wallet से hot wallet में move करने के लिए, उनके लिए. तो this part is not clear कि किस लिए hack हुआ है. तो I think root cause ढूंढना बहुत important है because तभी आप बोल सकते हो कि like who is responsible, because now it's a blame game. Right now I have been doing some digging as we are on the live, so I've sent you some of the links, so if you can open them up and broadcast it. So there have been a couple of things that is going on still now when we are speaking on the live. So one or two things is there have been some studies done by some of the people and people from security agencies or security companies and others who have come up with some of the things that have happened due to which the hack was executed successfully. Also, after the hack, the hacker have been doing some other things like sending WazirX token to Vitalik. So there have been some things going on there as well. And I've also sent you some links for people who have been sending messages to that hacker requesting money. So if you can open that up, I'll just broadcast it. I think as we have talked more about the serious things, now we can see what are the implications that is going on right now after all the big drama that happened. Yeah, so this is by Mudit Gupta. So he has just explained here like what really happened and how the hack was executed, basically. So if you can read it out, I think. So basically, वो बोल रहे हैं कि ये जो hack है, this hacker is an organized and methodical hack pointing towards DPRK as the hacker. So DPRK means not like Korea, not Korea. तो वो बोल रहे हैं कि you know they started practicing the hack on chain 8 days ago and finally executed it today. तो मतलब एटलीस्ट 8 दिन पहले से उनके वॉलेट टीम को ये फाइंड आउट करना चाहिए था कि समथिंग इज गोइंग ऑन, बट दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग बैड. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. बट मेरे हिसाब से वी शुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन जस्ट बेस्ड ऑन द सिग्नेचर कि किस तरीके से हैक हुआ है, बट वी शुड आल्सो लुक एट कि हैक क्यों हुआ. इज इट बिकॉज ऑफ बाइनेंस कस्टडी फेलियर या फिर यू नो पीपल हु वर रिस्पांसिबल मल्टी-sig सिग्नेचर के लिए उनके तरफ से प्राइवेट की लीक हुआ. Yeah, so Krish, if we go down on that
there he has explained like what had happened. So basically, two of the private keys were compromised from the team only, and after that, all the other things. So it's basically like we have been They trying were to do doing it for a signature long time. phishing. Yeah, so they are doing Yes. signature phishing. तो सिग्नेचर फिशिंग जैसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि some Nigerian prince has sent you $100 million, you want to withdraw it, या फिर आपके पास कोई नया जॉब ऑफर आया है and they ask you to download a software and then use GitHub to upload your code, all these things. तो ये जो हुआ आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस के थ्रू हुआ है, बट इट स्टिल डजंट मीन कि जो कि ऑथराइजर है, सिग्नेचर है, they are not responsible. They might as well be responsible for it because they might as well be careless, or they might as well be Yes. directly linked to this kind of thing, so that they can say that, hey, I did not do anything wrong, but I was tricked into it. सो बेसिकली ऑन चेन डेटा से आपको ये तो पता चल जाता है कि किस तरीके से हैक हुआ है, और सिग्नेचर क्या है, कौन पॉसिबल हैकर हो सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं प्रूव हो सकता है कि इफ these people were complicit in it or if they were really tricked. तो दैट इज व्हाट आई वुड से. तो इसीलिए मैंने कहा है कि यस, इसने पूरा यहाँ पे डिटेल्स में बोला है कि ये जो तरीका है ये नॉर्थ कोरियन हैकर्स यूज करते हैं, वो काफी दिन से ट्राई कर रहे थे, फिर उन्होंने जाके पहले यूएसडीटी विड्रॉ किया है, फिर उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करके, फिर दूसरा मल्टी सिग यूज करके, मल्टी सिग को अपडेट करके उसको यूज किया है, क्योंकि उनके पास पूरा सब मल्टी सिग लॉगिन्स नहीं थे. बट एट द एंड ऑफ द डे ये प्रूव नहीं होता है कि इफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग वर in it or not, or if there was any security breach which these people used to get in. So that's basically my point. तो ये सर्च और रिसर्च होना बहुत important है rather than on chain, क्योंकि on chain से तो complicitness पता नहीं चलेगा. Yeah. और ये जो Something है ये like काफी फनी है. the time being. So this is हाँ बोलिए. not something. I'm just saying that this is something that came up in the time being. So it's not like something very concrete that we can say and figure things कॉन्क्रीट है, out. बिकॉज ऑन चेन आपको ये पता चलता है कि Yeah. उसने किस तरीके से पैसा मूव किया है, बट ये नहीं पता चलता है कि इफ इनसाइडर्स वर देयर पार्ट ऑफ इट, और इफ it was really a hack and phishing strategy, or they utilized some wallet vulnerability. But anyways, for any side event there is some funny side of it. तो ये उसका funny side है. Exploiter is poisoning Vitalik's wallet basically. uh, it doesn't prove anything, and I don't think कि बहुत ज़्यादा कुछ amount है. It's like what? This is the amount. Transaction fee इतना है. You know, I can see the amount. Can Fractionality you see the amount? No, uh, no, वो तो gas fee है. yes. और वैल्यू तो पता नहीं है, वैल्यू कितना है वो बताया Value नहीं है. 0. बट हाँ, वजीर एक्सप्लॉइटर वाइटलिक को पैसा भेज रहा है एक ही चीज करने के लिए. बेसिकली ही वांट्स टू पॉइजन वाइटलिक्स वॉलेट, ताकि उसका वॉलेट भी स्कैम में आ जाए लोगों के, और कुछ नहीं. सो unfortunately, if you are a public figure, if everybody knows your wallet, this is something which can happen to you as well. So now people will say Vitalik has hacked it and this and that, which is probably not the case. तो ऐसा नहीं है. बस जो हैकर है वो वाइटलिक को पैसा इसलिए भेज रहा है ताकि उसका वॉलेट भी पॉइजन हो जाए. I think it's just like वो play around कर रहे ये हैं बस. सबसे ये सबसे ये न्यूज है कि वजीर हैकर से इंडियन पीपल आर आस्किंग मनी कि प्लीज सेंड हिम सम मनी, 250 मिलियन है आपके पास, आप कुछ मिलियन मेरे को भेज दो, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, एंड आई विल पास इन ऑन टू माय. एक जन ने लिखा है कि एक जन अच्छा इंग्लिश में लिखा है, तो आई एडमायर यू, कैन यू शेयर सम विद मी, दिस विल चेंज माय लाइफ, यू विल बी माय लाइफ बेनिफिशियर, दिस डीड आई विल पास डाउन टू माय डिसेंडेंट्स. मतलब यार अच्छा खासा इंग्लिश में लिखा है इसने बंदे ने. So these are also some things which happen.
और जो कि हो भी रहा है. I've also sent you some more thing. One is like Arkham also got involved into it. You आर्थम can तो pull up the उसने link. बोला है कि there is a bounty as well. They have Yeah. announced a bounty कि जो भी इस wallet ID या मतलब इनके आइडेंटिटी के बारे में बोल सकते हैं, they will give a bounty. I think they have put in 3 bounties, and I think Zach XPT have already submitted one of them. So he has commented also and submitted the bounties which was asked for. यहाँ पे इसमें बताया भी है कि किस तरीके से 8 दिन पहले उन्होंने सेफ इंप्लीमेंटेशन स्केलेटन को अपग्रेड किया था. तो बेसिकली 8 दिन पहले से ये हैक प्लान था. इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये टुडे मतलब सिमुलेशन के बाद उन्होंने आज ये किया. और क्या ऑल्ट कॉइनर्स लाइव में सबसे पहले किया गया था कि यू नो WazirX is hacked and 234 million has been moved out. एक चीज जो है जो अभी भी WazirX कर सकते हैं, दे कैन रीच आउट टू seal.org and they can lock in or blacklist the wallets or the wallets which have received funds. और इससे क्या होगा कि ये वॉलेट इजीली पैसा मूव नहीं कर पाएंगे. मतलब क्रिप्टो से USDT या क्रिप्टो से बिटकॉइन करने के बाद भी दे कैन बी ट्रैक. So they cannot just easily sell कोई भी exchange में या OTC के थ्रू. Hopefully WazirX team will look into it and get the things done. तो अभी तक तो ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का इम्प्लीकेशन हो गया कि शॉर्ट टर्म में क्या शॉक हो गया, मिड टर्म में क्या हो गया. लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या लगता है सैम आपको? I will go last because I will predict really doomsday kind of scenario. But what do you think, Shobik? लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका, राइट? इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट में यही चीज होना चाहिए कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है ये थोड़ा सा रेगुलेटर्स को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी हुआ है, कुछ सालों पहले वॉल्ट के साथ हुआ था, और आने वाले दिनों में हो सकता है और कोई एक्सचेंज के साथ भी ऐसा कांड हो जाए. तो अल्टीमेटली सफर एंड पे जो होता है ना, वो रिटेलर ही होता है, जिसके पास कैपिटल भी बहुत कम होते हैं और करने के लिए कुछ होते भी नहीं है. अगर मैं यहाँ पे मतलब ये बोलूँ कि इन्वेस्टर का फंड या फिर कोई सेवियर आ जाता है इसको रेस्क्यू करने के लिए WazirX को, तो फिर सबसे पहले सेटलमेंट जहाँ पे क्लियर होगा, ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है, वो लार्ज इन्वेस्टर का होता है. जो स्मॉल इन्वेस्टर या फिर स्मॉल ट्रेडर रिटेलर होता है ना, वो सबसे एंड में आते हैं चेन पे, और वो भी हो सकता है कि पूरा वापस उन लोगों को एसेट का जितना वैल्यू है वो ना मिले. तो ये एक कंसर्न वाला बात है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेगुलेटर्स को थोड़ा सा एक्टिवली इस बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाना चाहिए हर एक एक्सचेंज के ऊपर और क्रिप्टो स्पेस में. मेरा ये मानना है. Sam? Abhi jo weights and other things are there. So most of the people, I think, Coin-D6 also reached out, and some of the other security and bounties and all those companies have started investigating on it, and they have offered help. कि कुछ भी हो, our team are there and we are ready to help. Just like you told, जैसे अभी in the morning you have messaged the team कि if you need any help, we can help on these lines. So similarly, most of the Indian and other companies are there to help, and I think WazirX is also, their internal team is also working on to secure as much funds as possible. अब fully तो I don't know कि वो recover कर पाएंगे भी कि नहीं, but if they are able to recover a larger chunk of it somehow by, जैसे आपने बोला कि by blocking wallets or maybe just restricting the user or the hacker to sell it in OTC or other exchanges. So बाद में जाके ये हो सकता है कि अगर bounties या कहीं से hacker का पता चलने लग जाए, so then they will give them an offer of bounties 5-10% and then try to get the whole fund back. So which will lead to a very smaller hole rather than like half of their whole treasury. So I think on the longer side, if they are able to get all the funds back, it will not affect the exchange on a larger scale. But if not, I think by taking investor funds, वो तो बहुत ज़्यादा issue create होगा. And just like Shravik told कि
on the government regulations and policy side, you need to have stricter rules so that this kind of things doesn't happen. तो एक चीज ये है कि अगर वजीरेक्स अभी बंद नहीं करता है अपना ट्रेडिंग बुक, यू कैन स्टिल ट्रेड, राइट? और 1% टीडीएस डिडक्ट होके वो आपके पैन के अगेंस्ट में सबमिट होगा। तो जब तक वजीरेक्स बैंक्रप्सी डिक्लेयर नहीं करता है एंड यू कैन नॉट टेक मनी आउट, you can just keep on trading because 1% will keep on adding to your PAN, and that money Wazirex has to pay to the government, right? I mean, you cannot go out without paying the government, so that can happen. तो Wazirex को अपना order book बंद कर लेना चाहिए, वरना some Indian will find a way to hack it कि किस तरीके से वो अपना पैसा रिटर्न पाए. So for example, let's say you are having 1 lakh INR, in Wazirex, and you cannot take the INR out and you cannot take the USDT out. तो अब INR से USDT से INR 100 बार करो या 40 बार करो, जितने बार भी करो, and your INR gets stuck. You cannot trade anymore. But then it's INR which Wazirex owes to the government. It doesn't owe to you, right? तो लिस्ट में सबसे पहले गवर्नमेंट का ही नाम आएगा कि we have to pay the taxes. Government will not say कि no, you cannot pay the TDS, you cannot pay the taxes. So this is something I think some people might employ. Some people will employ other things as well, which I'm not going to say here. But overall, the scenario is quite grim. आपने जो बोला वो हो सकता है कि 10-20% या 10-15% बाउंटी देके उनको बाकी पैसा मिल जाए. But this is a time-consuming process. So at least 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, I guess, things will be down. And Wazirex was one of the bigger exchanges. I'm using the word was because I think from now onwards they will be in a downward spiral. तो ये दूसरे एक्सचेंजेस के लिए और दूसरे वैस पे के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि दे आर एबल टू सर्व द यूजर्स प्रॉपर्ली एंड नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ट्रबल. लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ये भी होगा कि गवर्नमेंट माइट एक्चुअली मेक थिंग्स सो स्ट्रिक्ट कि कुछ छोटे एक्सचेंज सर्वाइव ही ना कर पाए. So, for example, like an NBFC, if you want to open, you need like 5 crore or 10 crore at a minimum balance, right? Which is your own balance. तो अगर उस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट आके अगर इस तरीके का एक थ्रेशोल्ड बना देता है कि you need to have at least this much money to be having a license for an exchange, तो वो smaller exchanges के लिए एक थ्रेशोल्ड बना देगा या smaller players के लिए एक थ्रेशोल्ड बना देगा. So this might also be a problem क्योंकि then all the monopoly goes to the bigger exchanges. और बिगर एक्सचेंजेस को भी ये ख्याल रखना चाहिए क्योंकि at this point they have just too much control from user fund to user crypto to deposit to trading, everything. So government should definitely try and decouple this space so that risk कम हो जाए. तो for example अगर जापान की तरह सिनेरियो होता तो जापान में कस्टोडियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंड्स को सेफ रखने के लिए. सो आई थिंक 80-90% ऑफ द फंड्स इज सेग्रीगेटेड एंड केप्ट विद द कस्टोडियन. तो अगर हैक होता है तो कस्टोडियन का जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस. तो इंडिया में भी अगर सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाए तो देन इन दैट केस इवन इफ देयर इज अ हैक, इवन इफ देयर इज एन अनटोवर्ड इंसिडेंट, द स्मॉलर रिटेलर्स आर सेफ. So that is what I think we should go towards. With this, I think we have covered almost everything. We have given some tips how not to keep your money in the wallet. Agar hai to already, start trading and put that against your PAN because then it's your response. Then it's the company's responsibility to pay TDS to the government, not your responsibility. But yeah, better something than nothing, right? So I hope that users get back their funds and quickly as possible because this is going to affect the crypto condition in India. And इसे खराब नाम तो होगा ही, मतलब you cannot get away from it. FTX जो ग्लोबल केस था, आई थिंक उसके बाद वजीरेक्स ये इंडियन केस स्टडी बन जाएगा एक. That's right. And उसके बाद तो ये भी हो जाता है ना कि ऑलरेडी इंडिया में एंड बहुत सारी जगह पे तो doesn't have a very good name. So once you are on that path, people are walking and trying to do something. जब ये सब इंसिडेंट होते हैं, so people get another reason to say like देखो स्कैम तो हो गया. स्कैम तो होगा ही. लाइक अगर ये हुआ है, अभी लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे कि अब एक्सचेंज में पैसा रखते हो वो स्कैम कर रहे हैं. Yes. अब ये कॉइन खरीद लो, ये कॉइन आपके पास ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ये खरीद लो, मतलब
इसको यूज करके लोग अभी और भी स्कैम्स करेंगे, जस्ट टू पुट फियर इन पीपल्स माइंड. तो या तो पीपल विल फॉल फॉर दो स्कैम्स, और दे विल जस्ट से ओके फाइन, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. तो क्रिप्टो का माहौल बिगड़ गया बेसिकली. Yes. और ये भी हो सकता है क्रिश यहाँ पे कि बहुत सारे जो है ना, जो अपॉर्चुनिस्ट है, वो देखेंगे इसको फियर मॉन्गरिंग करके, ये बोलेंगे कि आपके पास जितने एसेट है आप सेल कर दो, और वहां पे एक प्राइस में जाके वो सेटल हो जाएगा, मतलब वही चीप प्राइस में वो नहीं, सेल वो कर तो देंगे. वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि समझ लीजिए अगर हम्म, वजीरेक्स में जैसे होता है बैंक्रप्सी सेटलमेंट, तो हम्म, वजीरेक्स में अभी आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, मैं आपको बोलूँ मैं आपको 10,000 देता हूँ, आप मेरे को वो दे दो, तो हम्म, आपको क्या लगेगा, आपको 10,000 मिल गया, यू कैन नॉट गेट दैट 1 लाख बैक. बट अल्टीमेटली अगर फंड हैक से रिटर्न आता है, you get 70-80%, so you will make money on that bankruptcy, जो कि FTX के साथ हुआ. तो there were people in FTX जो अपने claims को 15-20 cents में सेल कर दिए थे, 8 cents से 20 cents के बीच में सेल कर दिए थे. So now when FTX is paying back the whole amount, whoever has brought their claims will get, let's say, 80-90% of that money. So it's like a easy forex. और ये generally individuals नहीं करते हैं, ये hedge funds करते हैं, because hedge funds calculate the risk कि भाई मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूं तो मेरा रिटर्न क्या है, एंड इट्स इजी 3-4x रिटर्न फॉर देम. तो इसीलिए वो इस तरीके की चीज हेज फंड्स करते हैं. सो अनलेस यू रियली नीड द मनी, आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर इट. एंड सूनर और लेटर ऑन चेन भी इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे कि यू आर गोइंग टू सेल योर क्लेम ऑन चेन फॉर योर बैंक्रप्सी क्लेम बेसिकली, टू गेट बैक इमीडिएट मनी राइट नाउ, बट आप अपना क्लेम किसी और को सेल कर दे रहे हो. सैम, अगर आप होते तो आप क्या करते, आप उसको होल्ड करके रखते या 10 cents ऑन द डॉलर सेल करके निकल जाते? पहली बात तो मैं at 90% करता ही नहीं. डिस्काउंट. But if I had funds, so maybe I would just hold at this point. आई वुड रादर सेल एंड गेट आउट, क्योंकि अभी बुल हाँ, मार्केट है. लॉजिक, आप लॉजिक को समझो, अगर बुल मार्केट है, आप फंड को होल्ड किए, आपको पता नहीं कब तक आपको फंड मिलेगा, राइट? माउंट गॉक्स के जो right. यूजर्स थे उनको पता नहीं उनको कब तक फंड मिलेगा. इट कैन बी 3 months, 2 years, 10 years, वट एवर. तो आप अगर 10% लेके निकल जाते हो, ये 10% अगर आप जाके कोई भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर देते हो, आई थिंक यू कैन गेट 3x 4x इजीली. तो you will But, not lose but it, completely, but with certainty you will make some money also. बट अगर आप होल्ड करते हो, आपका कोई सर्टिनिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि शौविक जैसे कहा कि वंस बैंक्रप्सी क्लेम स्टार्ट, रिटेलर का जो फंड अटका हुआ है जो बैंक्रप्सी क्लेम्स में है, दैट इज एट द लोएस्ट प्रायोरिटी. तो आपको मिलेगा कि भी नहीं, नोबडी नोस. आई मीन दैट right, आई वुड हैव डन डिफरेंटली. but the thing is, right now we don't know like what's going to be the next thing, right? So आज ही ये चीज हुआ है, so maybe in 1 or 2 days we'll get to know more like okay, the funds are safe or they can get it recovered or what's the thing. So I just told not now, but it's not like इससे it's not now means इससे never. कुछ इससे कुछ अच्छे चीज भी हो सकते हैं. जो वजीरेक्स और बाइनेंस का होल्डिंग को लेके डिस्प्यूट चल रहा है बहुत दिन से पब्लिकली. आई थिंक इन प्राइवेटली आल्सो दे माइट बी फाइटिंग सम केसेस. तो इस इंसिडेंट के बाद वजीरेक्स कैन से ओके फाइन, बाइनेंस इज ओनिंग अस राइट नाउ, सो ऑल द लायबिलिटी इज ऑन बाइनेंस. तो ये जो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी हो सकता है, मतलब नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव. इस इंसिडेंट के कारण this whole saga which is going on between Binance and WazirX can be clarified. Binance will say okay, because finance के लिए 235 million is like a week's or half a week's trading volume, like fees, right? So they can easily make the user whole, and they are also registering as FIU, so they will actually get Binance India. So WazirX can be defined as okay Binance India. So WazirX India so becomes WazirX Binance, something like that. जैसे Gulf Binance हो गया है थाईलैंड, वैसे ही Binance can acquire the brand and actually do it. So not everything is bad. Maybe this is also a good thing that might happen, and probably this will happen.
This is what I think. But all in all, I just hope it's a hack, it's a phishing attack or whatever, and it's not an internal hack. Because if it is one, then the government should put proper legal consequences on the people who are responsible. Right. I think that's all from our side today. We covered a lot of things, positive, negative. I don't think there's any positive, but jo bhi hai, some things we mentioned which could be done by the users. Yeah, and all on top of that, all the fun and things that have been going on. This is something People that have we people have मतलब लोग किसी भी इंसिडेंट को फनी बना देते हैं. लोगों को मौका मिल गया ना, एक मौका मिल गया. लोगों को मौका मिल जाता है. and also like for all the support and things that people are coming up with for all Zirex, that is also one of the positive sides. Like all the other exchanges, all the other companies are trying to support and help in as many ways as possible. So let's hope that we get the funds recovered. We don't have to face all the bad situations and users don't have to suffer. So let's see what happens in the coming days. We'll keep you updated about what is going on. So आज का ये session थोड़ा सा we thought of to just give you what is the latest stance and all the things that have been going from today morning. So nothing is more clear right now. So as we get more news and updates about it, we'll schedule another maybe live session by next week so that we have more things to share. And till then, I think जो भी steps है वो भी बहुत चीज आगे बढ़ेंगे. So thank you all for joining in for today. Hope to see you guys next Thanks. week and keep Bye-bye. updated about the situation and hope you get back. Bye bye. Have a nice day.